अथ श्री आचार्य उमास्वामी देव विरचितं तत्त्वार्थसूत्रम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेश्या पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिकतिज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्धातिष्पशति च मतिमानयः स वै शुद्धदृष्टि सिद्धि जयव्यसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ति वन्दितार्हन्ते वोच्छमाराहणाकंसो उज्जवणमुज्जवणम् अडिपहणं साहणं चरणेच्छरणं दंसणनाडचरितं तवाणमाराहणाभणिया। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवाजीवाश्रवबन्धसंवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वं नाम स्थापना द्रव्यभावतस्तन्यासः प्रमाणनैरधिगमः निर्देशस्वामित्व साधनाधिकरण स्थितिविधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रद्धावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्रान्निःसृतानुक्तध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेकत्वादशभेदम् भवप्रत्ययो वधिर्देवनार्काणां क्षयोक्षं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुलमति मनः पर्ययः विशुद्धिप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धिक्षेत्रे स्वामिविषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेष्ववधे तदनन्तभागे मनः पर्ययस्त सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन् चतुरभ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सदस्तो रविशेषाद्रतिक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढैवं भूतानयाः इति तत्त्वार्थसूत्रे प्रथमोऽध्यायः। औपशमिकच्छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदैः पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्यादर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रैकैकैकषट्भेदाः जीव भव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विविधोश्च चतुर्भेदः संसारेणो मुक्ताश्च
समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यतेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियाद्रयस्तसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संगीनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणिगतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुर्भ्यः एक सम्या विग्रहा एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छनत् गर्भोपपादा जन्म सचित् शीत संवृत्ताः शेतरां ऋश्राश्च चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डस्पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजष्कर्मणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुरभ्यः निरूपभोगमन्वितं गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजस्मपि शुभं विशुद्ध्यमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयुक्तस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि ना देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्त्वार्थसूत्रे द्वितीयो अध्यायः। रत्नशर्करा बालुका पंकधूमतमो महात्मः प्रभाभूम्यो घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक्षत्रसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थाः तेष्वेक 3 सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः द्विर्विष्कम्भाः पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सहस्रविस्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्र पार्श्वा उपरिमूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विस्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्विगुणद्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहृधृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितः ससामान्य परिसत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगाः द्वैर्द्वयो पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः 14 नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधाद्वयो नद्यः भरतः 26 पंचयोजन शत विस्तारः 6 चैकोनविंशति भागा योजनस्य
तद्विगुण द्विगुण विस्ताराः वर्षधरवर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिणतुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिहासौ षट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां ताभ्यामप्रा भूम्योऽवस्थिताः एक द्वि त्रिपल्योपम स्थित्यो हैमवतक हारिवर्षक दैवकुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% द्विर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या मलेच्छाश्च भरतैरावत विदेहा कर्मभूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते तिर्यग्योनिजानां च इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे 3-अध्यायः। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिसुपितान्तलेश्याः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाभियोग्य किल्बिषिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपालवर्ज्या व्यन्तर्ज्योतिष्काः पूर्वयो द्वीन्द्राः कायप्रविचारा ऐशानात् शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत् सुपर्णाग्निवातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः व्यन्तराः किन्नर किं पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि सौधर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारे स्वानत प्राणतयो रारणाच्युतयोर्नवसु ग्रैविकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धिन्द्रिया व्यधि विषयोदुदिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्गैविकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वता दित्वन्य ऋणगर्दतोय तुसिता व्याबाधारिष्टाश्च विजयाद्विषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यो शेषास्तिर्यज्ञोनयः स्थितिरसुग नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्दहीनमिता सौधर्म ऐशानयो सागरोप में अधिके सानत कुमार माहेन्द्रयो सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आर्णाच्युता दूर्ध्वमेकैकेन नवशु ग्रैविकेषु विजयाद्विषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्योपम अधिकं परतः परतः पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपम अधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् अजीवकाया धर्माकाशपुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्याः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्याश्च पुद्गलानां नाडोः लोकाकाशे वगाः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एकप्रदेशाद्विषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्यभागाद्विषु जीवानां प्रदेशसंहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत्
गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगाहः शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुख दुःख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वापरत्वे चाकालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेद संघाताभ्यं चाक्षुषः सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पितानर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः न जघन्य गुणानां गुण साम्ये सदृशानां द्वयधिकादि गुणानां तु बंधेधिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्ययवत् द्रव्यं कालस्य सोऽनन्त समयः द्रव्याश्रया निर्गुणाः गुणाः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वार्थसूत्रे पंचमो अध्यायः। कायवाङ्मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य स कषाया कषाययोः साम्प्रदायिकैर्यापथयोः इन्द्रियकषाया व्रतक्रियाः पञ्चचतुः पञ्चविंशतिसङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्रमन्द ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं समरम्भ समारम्भारम्भ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषस्त्रिस्त्रिस्त्रिश चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गात् द्विचतुर्द्वि त्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निह्नव मात्सर्यान्तराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयोः दुःख शोक तापाक्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थान्य सद्वेद्यस्य भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुतत्संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बह्वारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील व्रते स्वनति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवैगौ शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर्वैयावृत्तिकरण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहाणिर्मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सदसद् गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्तिनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरणमन्तरायस्य इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे षष्ठो अध्यायः। हिंसानृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतं देश सर्वतो महति तस्थैर्यार्थं भावनाः पंच वाङ्मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुविचि भाषणं च पंच शून्यागार विमोचिता वास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण
पूर्वरथानुस्मरण वृश्रेष्ठ स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषयक रागद्वेष वर्जनानि पंच। हिंसा द्वेषस्पृहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। जगत्काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। असद्विधान मनृतम अदत्ता दानम स्तेयम। मैथुन ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निःशल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अणुव्रतोगारी दिग्देशानर्थ दंडविरति सामायिक प्रोसुधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। मारणांतिकीं संलेखनां चोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टेरतिचाराः। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। बन्धवदच्छेदातिभारारोपणान्नपान निरोधाः। मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। स्तेन प्रयोग तदारिता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रामाणातिक्रमा। ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृतंतराधानानि। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलच्छेपाः। कंदर्प कौत्कुच मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। योग दुष्प्रणिधानान्यनादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषुद्धुष्पक्वाहारः। सचित्त निक्षेप विधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। जीवित मरणा शंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। अनुग्रहार्थम स्वस्यातिशर्योदानम। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद्विशेषः। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे सप्तमो अध्यायः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विधेयः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहनी यायुर्नाम गोत्रांतरायाः। पंचनवद्वयष्टविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशद्वि पंचभेदा यथाक्रमम्। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां। चक्षुरवधि केवलानां। निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान गृध्यश्च। सदसद्वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदाः। सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रतिरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुंसक वेदा। अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकसः। क्रोध मान माया लोभाः। नारक तैर्यज्ञोन मानुस्तैवानि। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या कुरु लघुपघात परघाता। तपोद्योतुक श्वास विहायो गत्यः। प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेय यशस कीर्ति
क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् आदितस्त्रिसृणामन्तरायश्च त्रिंशत्सागरोपम कोटिकोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदिनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणामान्तर्मुहूर्ता विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतोऽन्यत् पापम् इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे 8मो अध्यायः। आश्रव निरोधः संवरः स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रैः तपसा निर्जरा च सम्यग्योग निग्रहो गुप्तिः ईर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसार ऐकत्वा नत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्ग्याचवन निर्जरार्थं परिशोढव्याः परिशहाः चोत्पिपाशा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निसद्या शय्या रोष वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतरागयोश्चतुर्दश एकादशिने पादर सांप्राये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराय योरदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाज्ञा रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोनविंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम् अंसनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध संयासन कायक क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित विनय वैया वृत्ति स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानुत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विवेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानां वाचना प्रेक्षणानुप्रेक्षा धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपध्योः उत्तम सहनैस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्तरौद्र धर्म सुखलानि परे मोक्ष हेतु आर्तम मनोज्यस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरत देशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नितस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाये विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम् शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युत्परत क्रिया निर्वर्तीनि त्रयेक योग काय योगा योगानाम् एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारं द्वितीयं वितर्कः श्रुतं विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांतिः सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप शमकोप शांत मोह छपक क्षीर्ण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः
पुलाकवकुस्कुशील निर्ग्रन्थ स्नातकाः निर्ग्रन्थाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिङ्गलेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्यः इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे 9मो अध्यायः। मोहच्छयाच ज्ञान दर्शनावर्णान्तराय छयाच केवलम् बन्धहेत्वत् भाव निर्जराभ्यां कृत्स्नकर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनन्तर मूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वात् बन्धच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आवेत्तकुलालचक्रवद् व्यपगतलेपालाभुवदेरण्ड बीजवदग्निशिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्रे गतकाल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहानंतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्त्वार्थसूत्रे 10मो अध्यायः। नमो नमः। कोटिशतं 12 चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्रयधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेवेहिं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदृढानमहोवहिं शिरसा अक्षरमात्रपदस्वरहीनं व्यञ्जनसन्धिविवर्जितरेफं साधुभिरत्र मम क्षवितव्यं को न विमुह्यति साष्टसमुद्रे दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्रपिक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातमुमास्वामी मुनीश्वरं जं सक्कैतं कीरै जं पुण्सक्कैतहेव सद्दहणं सद्दहमाणो जीवो पावै अजरामरं थाणं तवयरणं वैधरणं संयमशरणं च जीवदयाकरणम् अन्त्यसमाहि मरणं चौविह दुःखं मृणारेहि चौविह दुःखं निवारेहि चौविह दुःखं निवारेहि इति तत्त्वार्थसूत्रम्।